everyone, welcome to our channel. So this is very important topic for different architectural and design exams. Famous landmark and the cultural monument in the world. So our first monument is Petra, Jordan. It is also called the Lost City because it was built around 312 BC and rediscovered in modern time. One of the oldest city in the world that is the classical example of the most extraordinary prehistoric civilizations. Also known as the Rose City, or this is the UNESCO World Heritage Site. This is the more example of the Petra, Jordan. This is very famous temple in Petra. Petra is the oldest city in the world and the very good example of the rock cut architecture in the world. Our second topic is Eiffel Tower in France. Metal tower with 3 floors, 324 मीटर इसकी हाइट है. Built for the 1889 World Fair to celebrate the 100th anniversary of the French Revolution. Constructed by architect Auguste Eiffel, with the 704 steps to climb and also a lift to reach the top. Also known as the Iron Lady. जिस आर्किटेक्ट ने जिस इंजीनियर ने इसको बनाया है उसी के नाम पे एफिल टावर का नाम रखा गया है और ये पेरिस सिटी में बिल्कुल सेंटर में सिचुएटेड है. दिस इज द डिफरेंट इमेजेस फ्रॉम डिफरेंट एंगल. Third is Great Wall of China, one of the 7 wonders of the world, running in the sections over a long distance across China, over 21,196 kilometers, or we can also say 13,171 miles long, built with the stones, bricks, and tiles and wooden materials. Completed in 1644 and took more than 2,000 years to build. Has more than 20,000 watchtowers along the wall. Since it was built to protect the country, make it easier to collect the duty for goods that were transported along the Silk Road, the most popular tourist attraction in China. ये आपको डिफरेंट सेक्शन पे स्ट्रक्चर दिख रहा है. ये है वॉच टावर्स. इस वॉल को बनाने में 2000 ईयर से ज़्यादा टाइम इसलिए लगा बिकॉज चाइना में जितनी भी सिविलाइजेशन आई वो इस वॉल में अपने अकॉर्डिंग चेंज कराते रहे. दैट्स वाई इसको 2000 ईयर साल लगा पूरा कंस्ट्रक्ट होने में. ये है डिफरेंट एंगल से वॉल की इमेजेस. Kremlin and Red Square in Russia. Part of the Kremlin complex and located next to the Red Square and St. Peter's Basilica Cathedral in Russia capital city Moscow. More than 500-year old, it includes the wall with its 20 towers and as well as 4 churches and 5 palaces within the wall. It was one of the residences of Tsars, now the Russian president, resides here. The Cathedral of Vasily the Blessed, usually referred to as St. Basilica's Cathedral, is easily recognized due to its 9 bright colored onion shaped domes. So this is the image of ये पूरा कैरमेलिन सिटी में लोकेटेड है ये कैथेड्रल और ये इसलिए फेमस है बिकॉज ऑफ इट्स कलरफुल अनियन शेप्ड डोम. ओके. नेक्स्ट मॉन्यूमेंट इज लीनिंग टावर ऑफ पीसा in Italy. The freestanding bell tower of the Pisa Cathedral was built over almost 200 years and was finished in 1399. The original height of tower is 60 meter, 196 feet. But as it's leaning, the lowest side is less than 56 meter. The construction already caused many problems as the soil was soft, sandy, unstable. Already during the construction, the builder tried to balance the leaning side with the more columns on the other side, but the tower still leaned. Like many other buildings in the area, you can walk up the 251 stairs to view the platform at the top of the tower, which is quite an amazing experience.
तो ये लीनिंग टावर है पीसा में, ये कैथेड्रल के पास में ही बना हुआ है। ये काइंड ऑफ अ वॉच टावर है। जिस जिस तरीके से इस एरिया में दूसरी बिल्डिंग्स भी किसी एक डायरेक्शन में झुक रही है, वैसे ही लीनिंग टावर ऑफ पीसा भी झुक रहा है। ये वहाँ की सॉइल में ही गलती है, इस वजह से ये टावर इस तरीके से झुक रहा है। एंड ये इटली का बहुत ही फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन स्पॉट है। ये कुछ इस तरीके से बना हुआ है वॉच टावर। इसी के जस्ट साइड में पूरा पैलेस बना हुआ है। Next monument is Great Pyramid of Giza in Egypt, one of the seven wonders of the ancient world and the only one of those ancient world wonders still exists. Made of stone and bricks and sand near Cairo, which is the capital of Egypt. Built during a time when there was only manual labor and no machine lifting equipment available. Built to house the bodies of the pharaohs who run in ancient Egypt. Next to the Giza pyramid, there is a sphinx, the famous monument of the lion body with a pharaoh head, around 4,500 year old and constructed among the largest structure ever built. तो ये पिरामिड की इमेजेस, ये 3 पिरामिड बहुत फेमस है गीजा में। उसी के जस्ट साइड में एक और मॉन्यूमेंट है विच इज कॉल्ड फिनिक्स। इसमें लायन की बॉडी है और उसके ऊपर फेरो का हेड है। और दिस इज द बेसिक एग्जांपल ऑफ कि पिरामिड कैसे कंस्ट्रक्ट हो रहा था उसका। द नेक्स्ट मॉन्यूमेंट इज स्टैचू ऑफ लिबर्टी इन यूएसए, 92 मीटर या हम कह सकते हैं 305 फीट हाइट एंड मेड ऑफ एन आयरन स्ट्रक्चर विद कॉपर स्किन, दैट्स व्हाई इसका कलर सी ग्रीन है। By the massive iron skeleton of the body was designed by Alexander Gustave Eiffel, who also designed the Eiffel Tower. Built and completed in France in 1884, the monument was then disassembled into 350 pieces and packed into 200-fold carter and shipped to New York. The torch flame is covered with 24 karat gold and the crown has 7 rays for the 7 continents of USA. The monument stands on Liberty Island in the river facing New York City. So this is very famous monument in USA. ये जो फ्लेम है ये 24 कैरेट गोल्ड की बनी है और जो उनके सर पे क्राउन है उसमें 7 रोज है जो कि यूएसए के 7 कॉन्टिनेंट्स को रिप्रेजेंट कर रही है। Our next monument is Mount Rushmore National Memorial, Keystone, South Dakota. A must-see monument in South Dakota is situated in Black Hill, about 25 meters from the Rapid City. The 60 feet high granite faces famous rock sculpture of 4 US presidents, completed in 1941. So this is the image of construction कि कैसे बनाए गए हैं वो सारे मॉन्यूमेंट्स, और ये 4 यूएस के प्रेसिडेंट को ही बनाया गया है माउंटेन पे, और ये सिचुएटेड है इन साउथ डकोटा। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन फॉलो आवर चैनल।